Okay. Yeah, recording is in progress. Yes. Okay. Okay, where are we? Yeah. Okay, the above defined responsibilities shall be independent of each other, providing minimum workload for the governing body and the CEO commissioning the township features one by one and handing them over to the governing body for all future maintenance. Governing body members are requested to understand and confirm the administrative structure and resolve the same. The basic administrative anybody? Okay. The basic administrative structure aims at absolving GEREFA from the complex workload requiring professional expertise. GEREFA as a society association primarily focuses on developing intellectually for maintaining itself as an NGO, working towards better standards like running of schools, college, hospital, while the technical and legal expertise is outsourced, for which the CEO is responsible himself, possessing expertise to handle the political, social, technical, and legal complexities involved in development of the township. Financial accountability in making the development feasible shall lie with the CEO, making it practical to maintain the accounts of running the CEO's office, keeping the governing body and CEOs functioning independent of each other will take care of the smooth functioning of GEREFA. Tell me, sir. Asha ji or Treasurer Sahab has to react on this. Okay. Vimal, sir. Hanji. Good evening, sir. Are you with us? साहब आपने जो डिसीजन लिया बिल्कुल ठीक है. Okay, sir. So this is like we are forming the basic structure, and I would like to ask Mrs. Sabharwal. हाँ आशा जी. हाँ जी. अभी तक जो हुआ हमारा एजेंडा नंबर 1 is resolved. Hello. Yeah, I request all the members to react so that we can approve the agenda with the suggestions made by you people. Okay, I- Mayur. Yes. I approve. I think you all can raise your hand so that ये भी recording में आ जाएगा शायद. Raise hands कौन करते हैं? इसमें raise hands का है शायद. सूद जी आप बताएं. Any I approve. suggestions? Approved. Any Fully suggestion on that so that can be improved? No, I Vimal ji? don't have a suggestion, but I Alok think you have ji? covered it well. Alok ji? हाँ जी. At any present I have suggestion? no such suggestions. लेकिन जो प्रोसीडिंग्स जो आगे होंगी तो मेरा ये आइडिया है कि ट्रांसपेरेंसी की जैसे बात हुई थी तो गवर्निंग जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो चीजें बताई गई थी वो टाइम टू टाइम जीबीएम में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए. आई थिंक जीबीएम शुड बी कॉल्ड इन एवरी 3 or 4 months periodically. जैसे But we are planning to have a GB on every month. Okay. Yeah. अरे नहीं पूरी sir, there is some misunderstanding in our definitions. The executive committee and the governing body are the same. Yes. Okay. They are one and the same. Yeah. Above the governing body is the general body. General body. That will be 3 and 4 months. That should be at least twice a year. Twice a year. After the financial year ending. The other one can be sometime during the festival period.
where all the members has to be called, na? Yeah, where all members will be called. Yes. So that is the दो बार Hmm. उसमें सारा रखेंगे या रिपोर्ट होती है तो so that becomes the general body. In case जो स्ट्रक्चर मैंने अभी एम कर रहे हैं हम, उसमें ये है कि अगर सीईओ कुछ गड़बड़ करता है, Hmm. then the executive body can call the general body meeting. ठीक. और अगर executive body गड़बड़ करती है, then CEO can call the general body meeting. Yes. जनरल बॉडी ये फैसला करी वो सुप्रीम है जनरल बॉडी ये जनरल एक बॉडी इज सुप्रीम हाँ क्लॉज इसमें डालना चाहिए अपने बायलॉज में. Anyway, चलिए. this is just a suggestion. लेकिन बायलॉ अगर पास करते हैं तो इट बी गुड. Agenda number 2. So just a minute, sir. So we approve the agenda number 1 Okay. with some suggestions which we have made during the discussion. Agenda Okay. number 1 approved. Okay. Agenda number 2. We need to frame some bylaws for enhancing the participation of members, stakeholders, and legal aids. It is seen that we have reached the saturation point of participation by members. Time and again, appeal for funds is falling on deaf ears. You may suggest and also consider a few offered by the CEO. Number 1, all members, stakeholders, and legal aid on the WhatsApp groups should participate in a survey to express and understand their intentions regarding their plots. Non-participating members will be put in the idle group devoid of any communication from the governing body. 2, keeping the participation in the Kickstart Fund optional, members, stakeholders, and legal heirs must declare and register themselves with the governing body of GAREFA. After no response to 3 notices for participating in the above survey and updating the status in GAREFA, the number of the WhatsApp group should be put in the idle group. Purpose is to deal with the genuinely interested persons only. Let the 3 notices be sent every week, idling them in the 4th week. 4, float new memberships in the observations of having 277 plots now being allotted, not being allotted. The rate of plot to be decided by the governing body. So this is इसमें something not being allotted so far लिख दें, till date लिख दें, not being allotted till date. है ना? कर दो. For एक so मिनट में. far इसमें तो आपका मेरे को तो लग रहा है करीब 600 प्लॉट खाली होंगे. but you said ना 277. 277 क्या बोल रहे थे यार? Not yet allotted. हाँ आपने लिखा है ना, float new membership in observation of having 277 plot not being allotted. हाँ. तो इसमें not yet being allotted. हाँ, but 277 figure, if it is not correct, so we can modify. नहीं, ये 277 से बहुत आगे जाएगा सर. अच्छा अच्छा. हाँ, So फिर बहुत then आगे. range And दे we- दीजिए. And we will be able to create more plots also. हाँ, so range दे दीजिए सर. ठीक है. तो ये what language do you want? 277 plots yet to be allotted कर देते. Yeah, this will be better. 277 plots. Observation on having plots yet to be plotted. और Okay. more than 277 लिख दीजिए. If that is you having the 600 figure in your mind. मेरा तो 600 इसको रहने दो. जो है 277 का मेरे पास टेक्स्ट में है, किसी मीटिंग्स में मेंशन है. अच्छा ठीक है. हाँ, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है ना 80s का, हाँ ठीक है, फिर don't you. but this figure is mentioned. So we'll keep it at that. और बाकी जो निकलेंगे 300 मेरे को जो लग रहा है, दे मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं.
So for that, later on, you can take a decision. उसको क्या करना है. According to me, they should be cancelled. All of them should be cancelled. But let the executive committee decide, and later on, maybe the general body can also decide. Can we sort that out later? For now, I think we are done with this. अच्छा तो थोड़े bylaws वगैरह निकाल के हम लोग आपस में we will just finalize the bylaws to this effect and announce them. अच्छा next is the bylaws have been proposed. एजेंडा सेकंड का क्या डिसीजन रहा फिर? नहीं अभी मैं फर्दर डिस्कस फर्दर लेटर ऑन. इसमें मैं उस पे आ रहा था इसका रेट पर रेट एनालिसिस because you should know the rate analysis for your land right now. तो उसमें ये मैंने दिया है the bylaws have been proposed for sorting out the members according to their intentions. It is understood by and large members would like to dispose their plots. Now the question arises, what should be the prevailing rate of land? The circle rate of land in Ismailpur and Akwanpur is rupees 20,000 per square yard. The average market rate is found to be rupees 55,748 per square yard, while the highest demand is also a rate of rupees 1,21,428 per square yard. As the highest demand in the virtual market, the price escalation of land is found to be 17% since previous year. In our case, the price escalation will depend on how efficiently we will develop the land. Enhancing the price of a land will be another subject to be dealt with later. However, immediate fixing of the rate may be decided so that declaring the same among the members, stakeholders and legal heirs, followed by floating new memberships to generate the revenue for running the affairs of Gerefa. I think to start with, the purchase rate for the new members should be minimum rupees 10,000 to 15,000 per square yard. बाकी आप लोग आपस में डिसाइड कर लेना. So इस पे क्या कर सकते हैं? That point number 1 to 4 we are agreeing, and regarding the rates that member will decide in subsequent meeting and convey, है ना? Or explore whatever. If you want कि 2-3 more members may explore the rates, वैसा भी कर सकते हैं. देखा जाए तो एक्चुअली वी हैव टू टेक द डिसीजन कि हम किस रेट पे देंगे. नया मेंबर आएगा, वी विल अट्रैक्ट हिम विद प्लॉट, तो वो उसके लिए हम क्या रेट फिक्स करें? मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए इसके अंदर सब मेंबर्स को, है ना? ये एक्चुअली वी आर गोइंग टू फास्ट ऑन दिस. वी शुड आई थिंक लीव इट फर्स्ट फॉर डिसाइड कि हम वी आर इन प्रिंसिपल एग्रीइंग पॉइंट नंबर 1 to 4 ऑफ एजेंडा 2 regarding rates. This will be further discussed. Yes, I think that's the way to go. हाँ या so हाँ ठीक है. एटलीस्ट ये एजेंडा लाइव रहेगा और हमारे 1 से लेकर 4 तक पॉइंट जो है वो इन प्रिंसिपल एग्री कर लिए. 4 तक have been approved. हाँ, और regarding rate it will be further members will explore further. Okay. Later. Agenda number 3, can we go on to that? Yeah. Okay, preparing No, for it is not legal. visible. No, let me. It is not visible. Not visible. No.
So addenda number 3 is visible. Yeah, I think so. Yeah, Yes. agenda is visible. Okay. Should I proceed with agenda 3? Yeah. Okay, agenda 3, preparing for legally taking possession of the land. For this, let us break the task into participation of members, deciding on the events to take place on the day. I'll repeat this. For this, let us break up the task into participating for members, comma, deciding on the events to take place on the day of taking possession and funding. The time is fast approaching and we must clear the picture once our petition in the Chandigarh High Court has been heard. For maximum participation, let us target an attendance of 500 members of league stakeholders and legal heirs to come with their families, making it a grand event. All Kickstart funders and cooperating members, stakeholders, and legal heirs must reach out to each other and other members known to them, inviting friends to consider investing in Garepa. Considering holding events like Havan and Puja while demarcation is on, fencing and gating is also taking place because And this this fencing and this is actually taking place or will be taken place? will be taking place. Yeah. So it is impression is given that it is going on. Yeah, जिस दिन demarcation होगा, So will be also will be taken up. we'll be taking over the land and we will have all these activities also going on. ठीक है, या पूजा हो गया, while demarcation, fencing and gating is taking place. Hosting the hello will be taken place. will be taking place. वो कर देंगे, उसका just expression है ये. Hosting the administration of Faridabad on our land and making a committee for the same. We must have a hosting committee. जो भी आएगा, अगर DC is there, or the police commissioner is there, or DCP is there. So we must have a good bandobast for them, you know. Achha, then hiring the police band if possible. You can hire a police band. Okay. Yeah, I think is there in the, it is possible. Now, agenda 3 में आ रहा था funding. Final detailed estimate to be provided by the CEO and accordingly acquire and mobilize the plants, tools and equipment for taking place. The estimate will include permanent demarcation, fencing, providing prefabricated gates, 4 numbers, boom gates, the guard room and barracks for the security personnel. A tentative estimate of rupees 30 lakhs earlier had not considered rupees 6 lakhs per month for security. We should consider holding 6 months security in bank account. However, with 2 months deposit of security, we can go for taking possession and put in action the means of generating revenue for Garepa. If we are able to submit the Chandigarh writ petition within February 2025, we can expect the first hearing to take place before Holi. Implementation of the court cases will require preparing jointly with the administration of Faridabad. Major load of work will lie with Garepa because plants, tools, equipment and finances will have to be mobilized. The time required for preparation is minimum 1 month. It will be advisable not to commit the date of takeover till such time that we are fully prepared with our finances to sustain Garepa for 6 months. Hoping more members will fall in line to participate in the affairs of Garepa after the Chandigarh High Court orders have been issued, we may also require to generate funds from other means. It is important to make a statement to the local population and Garepa that Garepa has arrived and is here to stay.
Details of the estimate will have to be worked out and means of generating the funds will be discussed and resolved in the governing body monthly meeting. MN. I was abbreviating as GBMN, so that we don't miss GBM. GBM is general body meeting, GBMM is governing body meeting, monthly meeting. GBMM, which may be held on March 9th, 2025, soon after the second hearing of a writ petition WPC 1361/2025 on March 5th, 2025. Members are assured of working out the ways and means of generating the funds without creating a liability for Gerepa. It all has been worked out tentatively. That's it. Yeah. All members are requested to react. Anything has to be added? I have one question. If you are filing a writ petition at Chandigarh, say this month, another say 10 days to go, are you expecting a first hearing as soon as before Holi and a court order It takes a just to week. follow? नहीं, डायरी करने के बाद में, if there are no objections from the High Court, the Registrar of High Court, then we can do it in a week's time. Date लग जाता है. Writ petition में it's a week's time because it is a government agency which is involved as respondent. Okay. उसमें ज्यादा ये नहीं होता है कि आज absent है for the sake of justice ये करो वो करो ना. They Okay. have to be notices served, they have to be present. Yeah. And are you now fully prepared to file a writ petition, say this month? I am fully prepared. Our lawyer is also like very, what should I say? He is very confident and wants to do it as soon as possible. लेकिन थोड़ा सा health का issue हो गया अभी 4-5 दिन पहले. So I haven't disturbed him today being a Monday. Sunday को rest किया होगा. Give him one more day. Because once we sit down, then we finish it in about 24 hours to 36 hours. इसको खत्म कर देते हैं हम लोग. Yes, okay. बाकी तो इससे पहले भी कर रहे हैं, हो रहा है. ये 2 साल लग गए. पिटीशन पहले गया तो फिर लग रहा है कि अरे यार ये तो इतना आसान से होगा. Yeah. So same is with this. अभी initially we are collecting evidence of collect हो गया है. Strategy is already planned out, and we have strong reasons to say that these people have not fulfilled their job. In fact, they have given wrong statement. तो बहुत सी चीजें हैं जिस तरीके से ये लोग I think we have the administration cornered in Delhi. Same is there in Chandigarh also, in Faridabad. Yeah, एक minute. I'll just go and mute. हाँ, बगैर नेक्सस के नहीं हो सकता ना इतना बड़ा झमेला सर. तो द नेक्सस इज देयर कि ये नजर आ रहा है, कोर्ट में नजर आ रहा है कि भाई ये नेक्सस है इनका, एंड स्पेसिफिक ऑर्डर्स के लिए हम लोग तक जा रहे हैं ना. वी आर नॉट गोइंग फॉर ऑर्डर्स लाइक ठीक है लेट दी अकॉर्डिंग टू लॉ लेट दी एडमिनिस्ट्रेशन डी व्हाट. Here we are going specifically कि पीसफुल पोजीशन आपको देना है अकॉर्डिंग टू 2016 demarcation and Tehsildar certification, which is 100 acres. And then that they have to give us. इसके अंदर कितना भी construction हो गया, I am not bothered about. That demarcation we need. जो अंदर बैठा है उसको हम बाद में दें. So that is one part of it. इसके अलावा I think there was another thing. So where were we, sir? Hello. Hello. Ah.
So this is agenda 3 is also okay. Agenda 3 का I think it is okay, हाँ? Hmm. अच्छा, ये मेरे को आ गया है टुमारो, इनफैक्ट थोड़ी देर में मैं डाल दूंगा नोटिफिकेशन टू सीबीआई जो है ना इम्प्लीड करने का, वो पेपर्स हैव बीन आर रेडी, टुमारो दे विल बी फाइल्ड। तो उसमें एफिडेविट सीईओ का ही जा रहा है। लेट दी सीईओ हैंडल दी सीबीआई, जरूरत पड़ेगी आप लोग इनको तो बुलाएंगे। Oh, अच्छा, बैंक अकाउंट, अच्छा सीबीआई का कुछ कहना है? नहीं, सीबीएस का पहले सुना था कि सीबीएस ने क्लेम कर रहे थे कि they don't have possession of records. They got no record अरे that they collected them. ये आरटीआई से मेरे को मिला ना, हाँ जी। ये हमने और ये लेट देम से इट इन दी कोर्ट। Okay. Let them say it. We will not say it. We just want a certificate. Yeah. Copy certificate चाहिए हमें। That will All right. start with something. So it improves a lot. मीटिंग चल रही है ना, लाइव लाइव मीटिंग चल रही है। Okay, but otherwise we approve that. Okay, we move on to agenda number 5. Yeah. Sure. Yeah. Bank account. 4 में तो nothing much to do. मेरे को देना है affidavit, I will give it. Okay. Agenda number 5, bank account. Hmm. For issue of PAN card, it has been decided between the CEO and his CA to visit the income tax department and sort out the problems we are facing in opening the bank account this week. It is decided to pass a resolution informing the income tax department to update all the details. Principal contact person Mr. Jitendra Kadam, mobile number 9015820185, email ID janilbodygarepa@gmail.com. For the awareness of members, it is that 2 bank accounts are in the knowledge of the CEO. While one is a cooperative bank of Faridabad, the other is Axis Bank in Saket, Delhi. Probably Axis Bank, yeah, I'll have to check it, recheck this. So I will give you more details. Probably there are 2 more bank accounts. Both Yeah. these accounts should be applied for locking with immediate effect before we open an authentic bank account of Garepa. On a new PAN card, it has been discovered that PAN AAAG4603J in the name of Garepa also has to be applied for termination and apply for a new PAN. The income tax department has to be followed up regarding the PAN issue and explore to find out total number of accounts existing and operating in the name of Garepa. The required documentation has been drafted, which may be signed by the president and the secretary for submission. अच्छा, इसमें मेरे को एक चीज बताइए कदम जी, हाँ, जो बैंक अकाउंट होगा उसमें हाँ। कौन कौन मेंबर रहेगा? ये signing authority. You mean signing authority? हाँ, साइनिंग अथॉरिटी। जनरली Signing वो authority, हाँ, क्योंकि वो नाम देने पड़ते हैं कोई भी बैंक अकाउंट खोलेगा। president, secretary, and the CEO. नहीं, इसमें आप एक ट्रेजरर डाल दीजिए, क्योंकि आपको अकाउंट तो ट्रेजरर देगा ना लेटर ऑन। Treasurer is there to maintain the record. हाँ जो भी हम कर रहे हैं हाँ हाँ जाएगा। हाँ, ठीक है ना। सो ट्रेजरर का नाम अकाउंट्स में डाल, उसके बैंक अकाउंट उसमें भी दे दीजिए, अकाउंट ओपनिंग में। तो मेक इट नहीं, हिज नेम अकाउंट ओपनिंग में तो पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी का नाम जाएगा। हाँ हाँ, वो सातों के सातों मेंबर्स पे जाएगा। और लेकिन जो साइनिंग अथॉरिटी है, सिग्नेटरी, तो you can make it any 2 or 4 or any 2 or 3.
हाँ ऐसा करिए, अब मेंबर से बात करें। सो नहीं मिनिमम मैं 2 तो रहना चाहिए। नहीं, मैंने विमल सर से भी बात की थी एंड आई टोल्ड वी आर नॉट कीपिंग यू एज ए साइनिंग अथॉरिटी रजिस्ट्रार का, क्योंकि हम लोग वेरी एल्डरली मैन एंड आना जाना पड़े बैंक में या कुछ, plus he spent a lot of time there also. Moreover, we don't want, I wouldn't want to burden responsibility. So, I think 4, it is okay, Vimal sir, जी साहब, 4, any 2 or 4 कर देते हैं। जी जैसे आप ठीक समझो वैसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। When I said that, वो even here, it is any 2 or 4 कर दीजिए। So 3 that's कर लीजिए, resolved. विमल जी के साइन भी होने चाहिए। The treasurer has to sign. हाँ यस, Okay. ठीक है विमल जी। जी हाँ इट्स ओके ना? जी जैसे आप ठीक नहीं समझते हैं नहीं, वो वैसे कर ऐसे ही दीजिए। होता है। मैं सोसाइटी बाय लॉज के हिसाब से अगर देखेंगे तो नहीं, उसके ट्रेजरर को अकाउंट्स पुट अप करने पड़ेंगे। जी सो आपका उधर उधर रहेगा, सो दैट आपको मालूम रहेगा कि क्या क्या पैसा निकल रहा है। जी ठीक ठीक है ना? सो दिस इज जी ऑल जॉइंट, अदरवाइज जितना अच्छा रहेगा उतना ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। in that case, any 3 ना, ठीक हाँ है। एनी 3, ट्रेजर विल बी मस्ट, ऐसा कर लीजिए। और treasurer must, I am saying the CEO has to be must. हाँ सीईओ तो पैसे निकालेगा ही, तो उसमें क्या है। CEO has to be must, sir. ठीक है, सीईओ हैज टू बी मस्ट। CEO has to be must and any 2 of the 3. Or okay, should we move on to agenda number 6? अच्छा इसमें मेरे को एक चीज बताइए, जो जो पैन कार्ड है ना, हाँ ये तो ग्रिफा के नाम से ही बनेगा ना? हाँ, अच्छा, ग्रीन एस्टेट के नाम से बनेगा। हम्म। एक का फोटो है मेरे पास में, ये जो नंबर दिया है ना मैंने, हम्म। ये शायद मुन्ना लाल यूज कर रहा है। ठीक है। बट नाउ वी आर इंटरवीनिंग इन दिस, मैं घुस गया हूँ, हम्म। मैं अप्लाई कर रहा हूँ फॉर कैंसिलेशन और मेकिंग मी दी अथॉरिटी ऑफ दिस टाइम। ठीक है। सो agenda, this is okay. So agenda 6, एजेंडा if all 5, members have agreed, so shall we approve agenda 5 with the suggestions we have given to add Vimal also? okay. Mr. Vimal Chandar is also, the treasurer has to be one of the signing authorities. For 4 signing authority, then it's 3 में से। ठीक है। ठीक है जी। Okay, this is agenda number 6. Decide on the date of general body meeting after the equal possession of a land has been ordered by the court of law. Tentative 4th or 5th Sunday of March 2025. The decided date may be announced as possible. Any other by permission of the chair. So, tell me, ये 4th 5th संडे मार्च का मेरे ख्याल से टेंटेटिव रखते हैं, बिकॉज इफ वी आर होपिंग फॉर द हाई कोर्ट ऑर्डर्स टू बी टेकिंग प्लेस समवेयर बिफोर होली, तो मार्च में ड्यू हो जाएगी।
we can give, I think 30th of March is a Sunday. नहीं, अभी आप यू आर डूइंग दिस गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑन 5th ना? ये 5th हाँ, of आप एजेंडा नंबर 3 में देखिए, आपने 5th को लिखा है, 9th मार्च को लिखा है। agenda number 3 में एजेंडा नंबर 3 में 9 मार्च लिखा है ना, गवर्निंग बॉडी मीटिंग। 3 इसमें गवर्निंग बॉडी मीटिंग को नहीं हाँ, आप पेज नंबर 3 पर देखें। Yeah, we are preparing to take legal decision. Time is for the question to clear the picture, nothing. ये जिस दिन डिमार्केशन होगा उसकी बात कर रहे हैं हम। नहीं, आपने लिखा है, इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक स्टेटमेंट टू द लोकल population that Grifa has arrived and is here to stay. Detail of estimated will have to be worked out, and mean of generating the fund will be discussed and resolved in the governing body monthly meeting, which will be held on March 9. हाँ, so governing body meeting March 9th को होगा। हाँ, so after this you can take this general body meeting. We will हाँ, decide in the governing body meeting. उसके बाद में जनरल बॉडी मीटिंग होगी इसमें। हाँ, so आपने 4th and 5th is not correct. जनरल बॉडी का आप लोग भी डिसाइड कर लो, मैं भी कुछ सोच के रखता हूँ। हाँ, yeah. So whatever we will do, I maybe 30th मार्च रख लेंगे या 25th मार्च रख लेंगे। हाँ, कोई भी 25th या 30th को भी डेट निकलता है। We can keep it. अभी से थोड़ा सा मोमेंटम बना ले। So I think this is agenda number 6. That's it. Any other, by permission of the chair? Anybody else wishes to? All members, please react. Sabharwal ji, Alok ji, react on the any suggestion on all the 6 agenda. मेरे को है एक सजेशन क्या है, जो आप लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं, तो आई फुली एग्री विद दैट। ठीक है, अब वो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। चेक बॉक्स में हाउ इट इज, मीटिंग ग्रुप चैट होगा नीचे। हाँ, एनी अदर पॉइंट गौतम जी? Yeah, very important point. पैसा नहीं है सर। हाँ, ये बात है। ये मैं जो I really am lost right now. मैं भी होप करता हूँ आ जाता, कहीं से पैसा लगा देता हूँ मैं। अच्छा, लेकिन पर इसमें मुझे बताइए, वो ये आपके क्या कहते हैं किक फंडर्स में से किस किस के पैसे नहीं आए? अभी मामला काफी ड्विंडल कर गया, जिनसे नहीं आया है ना, मेरे को नहीं लगता वो देंगे। अच्छा, इसीलिए मैं ज्यादा प्रेस कर नहीं रहा हूँ। एंड प्लस दे कांट अफोर्ड टू, कुछ ऐसा चीज हो सकता है, तो वी कांट प्रेस इट। लेकिन हाँ, देर आर सम, उनको बोलते हैं हम, इनफैक्ट लाइक एजेंडा हम लोग का ये है, इसमें थोड़ा सा अपील देते हैं। इसमें पॉइंटर देख रहे हैं। इसमें जो मैंने कहा था ना, सॉफ्ट लोन कम लोगों ने दिया। सॉफ्ट लोन फेस्ट मी अबाउट हाउ मच? वो हो गया था सर, आपका ये वाला जो पिटिशन, दिस गॉट एक और झटका चाहिए। 3 4
One more financial jhatka needed, please. Agenda. ये 4 हो गया, 5 हो गया, बस तो अब हो गया, 6 है, बस 6 है बस एक बार। क्या काउंटिंग हो रही है? So I think with this, the chairman wishes to conclude the meeting. Yeah. So I must first of all thanks to all the members who have joined, and it's a beautiful, fruitful discussion. So we end up with the all the 6 agendas. So and all members have agreed that all the 6 agenda is approved with the changes as suggested during the meeting. एक चीज overlook कर ली, sorry sir, I'm interrupting you. There is कुछ CA ने मेरे को टेक्स्ट दिया था, वो the name description तो वही था यार, that was supposed to be happening. How come we have missed that point? एक one documentation has to take place income tax department के लिए. So resolution that is already you have said na that we will sign उसका आ गया है कहीं? agenda 5 में. Agenda 5 में. हाँ. The required document has been drafted, which may be signed by President and Secretary. Okay, okay, got it. Okay, Sorry, my bad. No issue, no issue. So once again, thanks. Any other points, if any member want to raise, so they can raise, and that can be taken care. Thank My you so time- much, Karnam ji, to facilitate this whole thing. Yeah. Oh. So I request all the members to please in the chat box, if any points are there, otherwise please write approved or agreed with all the 6 agendas. Yeah, that will be nice. And क्या नाम? Mayuk? Anji, Thank you for the AI thing. I think it will be a great help. yeah. वो minutes will- अपने, they'll come to me, na? Yeah, it'll come to you. Your originating email will come to you. उसमें लिख दे approve. चलो, that's good. लिखना होता है। और कोई लेकर आओ, membership के लिए लेकर आओ किसी को. मन नहीं करेगा कैसे? If anybody- अपलोड का इसमें So Asha ji, please write agreed. Okay, Sabharwal ji, लिख देना. approved. Chat उसमें चल. Either one of them can write, yeah. I've sent and approved on the chat line. Is that okay? Or shall I? Yeah. वो ये तो सब recording है. It is all there verbally and visually. That means it. आज सही मीटिंग हुआ है सर. I must congratulate. Seriously कोई आज. Well managed. This is how it should be. यार Yeah. Good job. Now we should learn to follow this protocol. रहने करेगी, रहने कहाँ है? अलग है. Chennai, good night, guys. Good night. Have a nice week. Good night, everybody. Thanks. Good night. Bye-bye. Bye and meet again. Bye. Thank you for coming. ये अप्रूव कैसे करते हैं इसमें? Welcome. अप्रूव जो आप टाइप कर दीजिए. चल चैट कहाँ है इसमें? देखिए चैट देखिए, पार्टिसिपेंट्स के आगे चैट लिखा है.
Participant नीचे ये तो अप्रूव्ड एजेंडा अप्रूव्ड वो लिखना है ना ये मीटिंग नहीं है मीटिंग चल रही है वो आशा की तरफ तेरी मम्मी की तरफ से लिखना है क्या हुआ? फिर से अगर फोन दिखाओगे तो अप्रूव्ड लिखना है ना Laura एजेंडा present approved. ओके दबा दो इस पे ओके ठीक है। पेट में करेगी ना अप्रूव करना एजेंडा अप्रूव्ड एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग अप्रूव्ड लिख दिया अप्रूव्ड। ऐसे लाइट ऑफ कर कैसे किया मुझे बता देना फिर दिक्कत होती है Okay, thanks. जैसे है, आ गया सबरवाल जी, आ गया। आ गया। So I think Rajiv ji, good meeting today, Yeah, good. and thank you for insisting कि सब लोग आओ भाई, ऐसे मीटिंग्स होना चाहिए। So इसमें आप बंद करोगे, मैं ही बंद करूंगा? आप भी कर सकते हो, यू कैन मेक मी दी होस्ट। हाँ, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। देखो नहीं आपको लीव कर दो Bhardwaj sir, thank you very much for being here. Thank you very much, Kasam ji, and very best of luck. हाँ, विमल चंद्र you also. Thank you. Thank you, sir. आज लगा है कि हाँ भी सीरियस नोट पे हम लोग शुरू कर रहे हैं, जरूरी भी है, जरूरी भी है क्योंकि नाउ थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना आपको होस्ट गवर्निंग। बना दिया, हाँ, होस्ट बना दिया। होस्ट बना दिया। ओके, हाँ, रिकॉर्डिंग भी आपके पास आ गई। ठीक है, ठीक है। चलो देन आई विल आप देखो, आप पहले सेव कर लो सब जितना भी है। इसको सेव करना, सेव तो हो जाता ना अपने आप। हाँ, देखो हो जाना चाहिए। हाँ, रिकॉर्डिंग मेरे को कल तक आ जाएगा रिकॉर्डिंग। हाँ, ये क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके पास आ गई है। मेरे पास आ होस्ट जाएगी। को आ गई ना, होस्ट के पास आ जाती है। हाँ, मैं उसको फिर चैनल पे भी डाल देता हूँ, लीव कैसे कर यूट्यूब पे आ जाता है वो। चलिए ठीक है। फिर, ओके देन, Thank you. थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई विल एंड द मीटिंग फॉर ऑल। आज मेरे ख्याल से सबको लीव we कैसे all, हाँ, ओके जीतू ओके, गुड नाइट Good night. Patri. everybody।